Good morning, student. Welcome you all. So, as we were discussing the part second of the chapter number second, the sound of music, and the part second name is the Shehnai of Bismillah Khan. So, we have already seen the very first part of this story, that is how Shehnai came into existence and how its name is Shehnai. And also, we have read the childhood story of Ustad Bismillah Khan. So, now let us see what the next part of the story says. Paragraph number 6, or you can say the point number 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. So, Bismillah Khan, when he was 14 years old, वो अपने जो अंकल हैं इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ, अंकल की कंपनी के साथ जाते थे. कंपनी मतलब उनके साथ, उनका साथ हो जाता था उनके साथ, और वो कहाँ जाते थे? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में विद हिज अंकल. At the end of his recital, so here the word recital means performance. All right, so when he was done with his performance, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, so there is one Ustad and his name is Ustad Faiz Khan, and he was patted the Bismillah Khan back and he said that time, work hard and you shall make it. So work hard, and what is the meaning of you shall make it? So you shall make it means, so you will get a great success. All right, if you work hard. So with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. So here the All India Radio means that some radio station was opened in Lucknow in 1938, and came Bismillah's big break. And that time Bismillah Khan got a very big break. He started performing on the radio station, all right, in Lucknow. He soon became an often heard Shehnai player on radio. So वो जल्दी ही बहुत ही कम सुनाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. कहाँ पर? On radio. So when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. So that is what I told you in the beginning of the chapter. So here when India got independence on 15th August 1947, that time Bismillah Khan became the first Indian जो किसको ग्रीट कर रहा था? हमारे नेशन को ग्रीट कर रहा था with his instrument, with his Shehnai. All right, so he poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gives his famous Terrorist with Destiny speech. So now we know that which rag was played by Bismillah Khan on the occasion of Independence Day of India, that is Rag Kafi. और उस दिन केवल ये ऑडियंस थी, ऑडियंस के अलावा वहाँ पे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. एंड आफ्टर हिज परफॉर्मेंस मीन्स आफ्टर द बिस्मिल्लाह खान परफॉर्मेंस, आवर प्राइम मिनिस्टर मीन्स our first prime minister, that is Pandit Jawaharlal Nehru, gave his speech, and his speech title is Ties with Destiny. All right. 8th paragraph. Bismillah Khan had given many memorable performances both in India and abroad. So we all know उन्हें worldwide जाना जाता था. He only gave performance in his वो सिर्फ इंडिया में ही परफॉर्म नहीं करते थे, इसके अलावा वो अब्रॉड में भी परफॉर्म्स करते थे. मतलब इंडिया और अब्रॉड दोनों में ही वो परफॉर्मेंस अपनी देते थे. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. So here his first trip, उनकी first trip कहाँ की थी? अफगानिस्तान की. And the Afghanistan king, that is Zahir Shah, was so much taken by, attracted or charmed by, means so much fascinated, and he was so much attracted towards his music, means towards Shah music, Shehnai. So he gifted so many things
which were made in Afghanistan. So जैसे अब यहाँ पे अफगानिस्तान में, और प्राइसलेस गिफ्ट क्या था उनका, पर्शियन कार्पेट उन्होंने एक दी थी, एंड अदर सोविनियर्स. तो हियर द वर्ड सोविनियर मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट. ऐसी किसी जगह की जो उसकी याद में दी जाती है. जैसे हम आगरा जाते हैं तो वो हमें ताजमहल गिफ्ट करता है, राइट, और भी जहाँ पे उसकी जो जानी मानी चीजें वो सब गिफ्ट करते हैं, तो इट्स कॉल्ड द सोविनियर्स. ऑलराइट. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. So here there are many other people also who were attracted to his music, means to his Shehnai music. केवल जो अफगानिस्तान के जो किंग थे वो ही नहीं, इसके अलावा there are so many people. So film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival. So here जो विजय भट्ट है, विजय भट्ट was a director and he was so much touched with his music. एक फेस्टिवल पे बिस्मिल्लाह खान ने जब एक फेस्टिवल पे प्ले किया था म्यूजिक, he was so much touched with his music and that he named the film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. और after that he made a film and the film name is Goonj Uthi Shehnai. एंड द फिल्म वॉज अ हिट. और फिल्म क्या थी, वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी, मतलब. सो एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट इनटू अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. एंड द अदर थिंग इज कि जो उनका एक कंपोजिशन था, मीन्स दिल का खिलौना है टूट गया, इट वॉज अ कंपोजिशन ऑफ Bismillah Khan, and it was chart buster. It was hit chart buster, मतलब record breaker. All right, so it broke all the records. Means this song broke all the records. Despite this huge success in the celluloid world. So here the word celluloid means old-fashioned way of referring to film. Celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt Goonj Uthi Shehnai. So यहाँ पे क्या था कि जो लिमिटेड थे, मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी जो फिल्म की, वहाँ पे टेस्ट अलग होता है लोगों का फिल्म के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे वेंचर का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट सेट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क. तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें रिस्क रहता है, मतलब फिल्म हो या कोई सॉन्ग हो, अब ऐसा जरूर नहीं ना वो हर सॉन्ग या हर फिल्म हिट हो, तो उसमें एक रिस्क रहता है. तो बिस्मिल्लाह खान अपने मीन्स इन हिज होल करियर, इन हिज एंटायर करियर, ही गॉट ओनली टू प्रोजेक्ट. वन इज गूंज उठी शहनाई, मीन्स फिल्म प्रोजेक्ट की बात हो रही है, एंड द सेकेंड वन इज विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड द विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचर संधाई अपान्ना. सो ये दूसरा इनका प्रोजेक्ट था जो कन्नड़ में था, कन्नड़ वेंचर में था, और इसका नाम क्या था, संधाई अपना. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film word, he says with emphasis. Emphasis का मतलब क्या होता है यहाँ पे, to lay stress on something, right? किसी पे बहुत स्ट्रेसफुल बोलना, उसे एम्फेसिस कहते हैं. सो वो बहुत एम्फेसिस मैनर में बोल रहे थे कि ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, मीन्स जो ग्लैमर वर्ल्ड है, जो फिल्म वर्ल्ड है, ये बहुत डिफरेंट है. मीन्स इफ कंपैरेटिवली अदर जो फील्ड है उनसे अगर हम करते हैं, तो कंपेयर करते हैं, तो इट्स क्वाइट डिफरेंट. सो ये कह रहे हैं एक आर्टिफिशियल वर्ड है, तो ये आर्टिफिशियल लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते थे. ऑलराइट, सो इस बात पर उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया. Award and recognition came thick and fast. So here the word thick and fast means he got a lot of award and was recognized at many places. All right, so he got lots of award और बहुत ज़्यादा जगहों पे इसको recognize भी किया जाने लगा. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. So we all know that Bismillah Khan performed all over the world. So he has performed first is United States of America in Lincoln Center Hall,
and he has performed in World Exposition in Montreal. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So he has performed बहुत सारी जगहों पे he has performed, like he has performed in Lincoln Center Hall at United States of America, and World Exposition at Montreal, and Art Festival in Cannes, or in the Osaka, and he has performed in the Osaka Trade Fair also. Alright, so well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque, Ustad Bismillah Khan. So he got so much fame and name. Alright, तो उसके बाद जो तेहरान था, तेहरान का जो ऑडिटोरियम था वहाँ तहार, उधर का नाम ही चेंज कर दिया गया, मीन्स उसका नाम क्या रख दिया गया, उन्हीं के नाम पर तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सो इट्स लाइक कि ये बहुत प्राउड वाली बात है टू ऑल, मीन्स पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के पीपल के लिए. ओके, नेशन अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. So conferred means given, usually an award or a degree. See, when an award or degree to given in someone, or it says had been conferred him, so उसे conferred कहा जाता है. तो see, जो national awards होते हैं वो बहुत ज़्यादा profound होते हैं, मतलब वो हर किसी को चाहिए होते हैं, और हर इंसान ये चाहता है कि इस तरह के award से उनको भी रिस्पेक्ट दी जाए, लाइक पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न एंड सो मेनी. So in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna Award. So we all know in 2001 he got an award, that is the Bharat Ratna Award, and it was a very prestigious award, one of the very prestigious awards. So with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said. So here the word coveted means much desire. So he was much desire. उसके chest पर वो medals थे, उसके जो awards थे वो उसके chest पर ऐसे ऐसे उसने रख रखे थे, and his eyes shining with rare happiness, और बहुत खुश था वो, he was very happy and his eyes shining, and he said, all this is Hindustan richest tradition. Sorry, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn music. So in his speech, he said to all the Indians that please teach your children music. Right? Because music और मतलब एक हमारा हिंदुस्तान का एक rich tradition है, और even in the West में भी, even in the West is now coming to learn our music, मतलब वो भी हमारा music अब learn कर रहे हैं, सीख रहे हैं. All right. So in spite of having traveled all over the world, so although Bismillah Khan traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called its accentingly fond of Benares and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. So although Bismillah Khan, Ustad Bismillah Khan traveled all over the world, he received much respect or recognition, but still these two places means Banaras and Damrao. So Banaras where he learnt music, and Damrao where he born and brought up. So were these two most wonderful towns for him. A student of his once wanted him to had a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating. So replicating means copy of something. ठीक है? The temples there. So अब एक बार क्या हुआ, इस चीज़ का प्रूफ आप कह दो कि एक स्टूडेंट थे उनके, बिस्मिल्लाह खान के, उन्होंने वो यूएसए लेके जाना चाहते थे बिस्मिल्लाह जी को.
उस्ताद बिस्मिल्लाह जी को, और उन्होंने ही प्रॉमिस टू उस्ताद कि वो एक एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देंगे, रेप्लिकेटिंग कर देंगे किसको, बनारस के टेम्पल्स को वहां पर. बट he would recreate temple of Banaras in USA. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. So here the Khan Sahab means Bismillah Khan said कि क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कैन यू ट्रांसफर रिवर गंगा एज वेल. Later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning. So here the word yearning means longing, right? Having a desire of something. ठीक है, किसी चीज की इच्छा होना. तो ये कह रहे हैं कि whenever I am in foreign country, मतलब मैं कहीं पर भी किसी भी foreign country में होता, I keep yearning to see हिंदुस्तान. मतलब उनकी longings रहती है, विश रहती है कि वो हिंदुस्तान को देखते रहें. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. और when he was in Mumbai, तब वो किसके बारे में सोचते थे ना, बनारस और होली गंगा के बारे में. And while in Banaras, I miss the unique matha of Damra. और जब वो बनारस में होते हैं तो वो किसके बारे में प्रे करते हैं, he was missed his village, that is Damra. So Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of a rich cultural heritage of इंडिया. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है, एक कल्चर हेरिटेज, एक रिच है. हमको बहुत हम इंस्पायर हो सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा डिवोटेड है टुवर्ड्स हिज कंट्री, टुवर्ड्स हिज नेटिव प्लेस. वन दैट एफर्टलेसली accepts that a devotee Muslim like him. So devotee means believing strongly in a religion or obeying its laws and following its practice. All right. So Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning. तो कह रहे हैं कि वो although he was Muslim, but वो क्या करते थे कि वो म्यूजिक प्ले करते थे, कहाँ पे, शहनाई प्ले करते थे, और बहुत ही नेचुरल वे में प्ले करते थे, बहुत डिवोटी थे उसको लेकर. एंड शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. कहाँ पे प्ले करते थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल में. मतलब वो मुस्लिम थे, स्टिल वो एक टेम्पल में शहनाई प्ले करते थे. So with this we come to an end with the line by line explanation. I hope आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा. हमारे दोनों पार्ट्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे इस चैप्टर से. तो अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हम एक म्यूजिक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है. All right, so till then take care of yourself and thank you.